and hi everyone. Welcome back to my session. Yes, which are all of you, all the live learners, welcome back to my session. Thank you so much for joining in. I welcome you all. Today we are conducting a session on ICSE history and this is a session for class 7. Bacha, this is a special session on your popular demand, that is the solved question answer of your particular Ratna Sagar book. I am presenting you the solved question answer. And if you have visited the earlier session, that was the very pehle session, you know this is going to be a quiz round. Okay, I would like to say hello and hi to Kunal Kumar, Anu, good evening. Reena Kumari, hi. Diksha, good evening. Mithi, good evening. Yashita, good evening. Thank you so much for visiting in. Vedika, Ankit Kumar, Arts, Kunal, everyone, Janvi, everyone. Thank you so much, Bacha, for joining in. Call all your friends, call all your relatives. जो भी जिन्हें भी आपको लगता है this is going to be beneficial for them, call all of them. Bacha, this is presented by me, that is Simran Priya. Moving on, we are in today's discussion, we are taking up the topic chapter 2 of your book, that is Spread of Christianity. We have already done chapter 1. Chapter 1 का question answer हम लोगों ने कर लिया है बच्चा, and this is chapter 2 of your book बच्चा. Thank you so much. Akanksha Kumari, good evening. Kishu, good evening. Janvi, hello. Reshika Sinha, good evening बच्चा. Alien Gamers, good evening. Thank you so much बच्चा, every one of you. Thank you so much for visiting in. Moving ahead, what will be your table of contents? That is how we are going to proceed with this particular chapter. किस तरीके से हम इस chapter के साथ proceed करेंगे वो आपको इसमें दिखता है. So first of all, we will be doing fill in the blanks of your exercise. Then we will be doing the correct word. There is a word that is highlighted that is wrong in the sentence. You have to correct that word and write the correct word. Okay, then we will do one word answers and give reasons, and then after all we will be doing question answers. Yes, of course. Thank you so much Iti, thank you everyone. Oh, thank you बच्चा. आप लोग अपने friends को जल्द से जल्द बुलाइए, because I can see very few learners बच्चा. This is going to be a very exciting session. So more the learners, better it will be. More will be the competition. So agar you want to compete in the real live session, so call all your friends bacha for this session. Till then, let me introduce myself. So my name is Simran Priya. I am your educator. You call me Simran Ma'am, and I have done my graduation and my masters from Delhi University, and currently I am teaching in an ICSE school known as Carmel School, and that's all for now. Now moving ahead to Vedika. Thank you so much. Am I audible and visible? Can anyone please tell me that am I audible and visible to you? As Ash ma'am has started, is she asking a question, or please tell me, but please give me a heads up that am I audible and visible to you or not? Now, hello Poonam Das, thank you so much Bacha for joining in. Now, before starting, let me know that am I audible and visible to you or not? Yes, okay Kishu, okay Meeti, thank you Vedika, everyone, thank you so much. Yes Janvi, now thank you so much for telling me that yes, I am audible. Yes, okay Iti. Now let's start the session. We have 14 new live learners, and now let's start the session. Okay, let's start the session. Okay, bacha. Okay, so should I start the session? Is it clear? Is it clear to? Is it okay to start the session? Okay. Now, moving ahead with the first segment, that is fill the correct answer. Yes, thank you so much Yashita, Alien Gamer, Reena, thank you so much.
Reena, wow, you have answered. You have answered all the one. Okay, so I will be just going ahead. कि आगे क्या होगा? So let's start with fill in the blanks. चलिए fill in the blanks से शुरू करते हैं बच्चा. The first question. Now how you need to proceed? जैसे ही question आपके board पे आएगा, आपके screen पे आएगा, you need to reply, and I will be calling out the top 5 learners. I will be calling out the name of the top 5 learners. Now, if you want to be that learner, जिसका नाम मैं बुलाती हूँ, so be patient. Do not answer beforehand. Be patient to receive the question and then answer. Okay, is it clear? Now, let's start with this quiz. Now, moving ahead, the first question on your screen is Emperor Dash granted special privileges to the Christian. Who was the emperor bacha of the Roman Empire who granted special privileges to the Christian? Who was that? Now go ahead and bombard this chat group with your answers. All 16 of you, yes. Okay, so it is given by Poonam Das, Janvi Tiwari, Ishika Sinha, Akanksha Kumari, Kishu Raj. These are the top 5 contestants, and yes, of course, congratulations to other two. It was Emperor Constantine, bacha. Constantine. Very good. He was the first emperor of the Roman Empire जिसने embrace किया था Christianity को और उन्होंने spread करने के लिए Christianity को several steps लिए थे. So he was the one who granted the special privilege. Thank you so much others also for writing the answers down. Now, the second question on your screen. Second question. Now, be ready for the second question. This is your second question. Dash was a system of granting lands on the condition of the service. आपको एक ऐसा system बताना है जिसके through lands दिए जाते थे और इसके return में service मांगा जाता था बच्चा. Now your time starts now. Go ahead and answer this question. Now, first answer came from Janvi Tiwari, Diksha, Poonam Das, Kunal Kumar, Meethi. These are the top 5 contestants who have answered it correctly. Also, we have Vedika, Akanksha Kumari, Kishu Raj, Ishika, Yashita, Anu. All of you, bacha, all of you, congratulations to all of you. But the top 5 I named it. It was feudalism. Of course, it was feudalism. What will be the correct answer? Feudalism was the system of granting lands on the condition of the service. You know what is the feudal structure? सबसे ऊपर में king, उसके ऊपर में कौन? Feudal lords, right? Feudal lords. उसके बाद में कौन? Knights. And उसके बाद में came the peasants. So एक दूसरे से ये सर्विस लेते थे और उन्हें ज्ञान देते थे. जैसे king feudals को देता है grants और king इसको देता है, and then it's proceeded. Okay, moving ahead. Thank you so much for participating. Moving ahead to the third question. Dash was the capital of the Eastern Roman Empire. It's a very simple, very simple. Go ahead, take your time and answer it as quickly as you can. Now, be alert on your phones. Take your phones, take your laptops and type it as quickly as possible. So the answer will be Poonam Das, absolutely correct. Janvi Tiwari, Akanksha Kumari, Iti and Diksha. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, Diksha. These are the top 5 contestants. Yes, you are the top 5 learners, bacha. It will be Constantinople. Very good. आप लोग एकदम अपने एग्जाम के लिए तैयार हो. I can see that. Now, very, very good. I congratulate all my learners who have answered it. Moving on to the fourth question. Dash were the holy wars that were fought between the Christians and the Turks. वो holy war आपको बताना है जो Christians और Turks के बीच में बच्चा फाउट किया जा रहा था. So yes, it would be Mithi. Thank you so much, Poonam Das, Vedika. Okay, so I have only got 3. Okay, Vedika, Iti, Janvi, Akanksha, Poonam Das, Kunal. These are the top peoples who have answered it. ये क्या होगा बच्चा? Crusades.
recapture Jerusalem. जेरूसलम को रिकैप्चर करने के लिए ये धर्म युद्ध किया गया था और इसका नाम क्या है? क्रूसेड्स. वेरी गुड बच्चा. मूविंग अहेड टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, दैट served as a center of religious and secular learning. Where if you have visited, if you have learned through my session, आपको ये आंसर पता है. That served as the center of religious and secular learning. कौन सी ऐसी जगह है जो सेंटर है रिलीजन का भी और सेक्युलर लर्निंग का भी? सो वेदिका, थैंक यू. पूनम दास, जानवी तिवारी, इति, आकांक्षा, दीक्षा, these are the top contestants and they have answered it absolutely correct. मोनास्ट्रीज होगा बच्चा. वेरी गुड. मोनास्ट्रीज होगा. वेरी गुड बच्चा. आई एम so proud of you and I can see there are so many people like Anu, Kishu, Raj, Mithi, Kunal, Ishika, Pooja Dubey, Yashita. I am proud of you too बच्चा. आप लोगों ने भी एकदम absolutely correct answer दिया है, so I am so proud of you. Moving ahead to our next segment, correct the word. करेक्ट द वर्ड. यहाँ पर आपको एक वर्ड है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो गलत है. आपको उस वर्ड को करेक्ट करके लिखना है बच्चा. आपको बताना है कि करेक्ट वर्ड क्या होगा. मूविंग अहेड विद आवर फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सेंट जोन्स spread Christianity in the Roman Empire. क्या सेंट जोन्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर में फ्लरिश किया था? So the answer is given by Diksha, Janvi, Pooja Dubey. Yes, very good. Kishu, Akanksha, Yashita. Thank you so much, bacha. Yes, you are the top people. It will be Saint Paul. Yes, Saint Paul थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर में फ्लरिश किया था. हालांकि सेंट जॉन एंड सेंट पॉल दोनों ही डिसाइपल थे जीसस क्राइस्ट के और दोनों ही ने बहुत उम्दा काम किया है क्रिश्चियनिटी को फैलाने में, लेकिन रोमन एम्पायर में जो फैलाते हैं वो रहते हैं सेंट पॉल. सो द करेक्ट आंसर विल बी सेंट पॉल. Moving ahead to our next question, question number 2. Emperor Theodosius was the first Roman emperor to embrace Christianity. कौन पहला एम्पायर, पहला रोमन एम्पायर था जो इसने इम्ब्रेस किया था क्रिश्चियनिटी को? बच्चा ये सबसे इजी है, पहले ही पेज में दिया हुआ है. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यू नो द आंसर. यस, प्रीति सिन्हा. Yes, it will be Preeti Sinha. Very good. Kunal Kumar, very good. Poonam Das, Janvi Tiwari, Diksha. These are the top contestants who have answered it correctly. Top 5 people I am naming it. So it will be Emperor Constantine बच्चा. Constantine, very good बच्चा. इन्होंने embrace किया था और इन्होंने several steps भी लिए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए. जैसे कि what were those steps? इन्होंने संडे को हॉलीडे बना दिया था, राइट? इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे चर्चेस बनाए थे. इन्होंने क्या किया था? इंपॉर्टेंट जॉब्स में क्रिश्चियंस को अपॉइंट किया था कि नहीं? और इन्होंने क्या किया था? फ्रीडम दिया था Christian people go to practice their own religion. So these are the points जो इन्होंने किया था. Very good, absolutely. I'm so proud of you. You people are absolutely nailing it. Moving ahead to our next question. Visigoths and dash tribes invaded Rome. Visigoth and dash tribes invaded Rome. So what will be the answer? Which tribes invaded Rome? Visigoth और कौन सी ट्राइब थी जिन्होंने invade किया था रोम को? Can you go ahead? Okay. So people are answering it. Now, in this particular question, I am getting different answers. Okay. So bacha, if you want to include all of them, the correct answer or the answer, all of you people are absolutely correct. अगर आप एक भी लिखते हो, लेकिन आप अगर सारे को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जर्मैनिक ट्राइब लिख सकते हो. सिंपल. विशिगॉथ और अदर जर्मैनिक ट्राइब्स जो थे उन्होंने इन्वेड किया था रोम को. हालांकि
टर्की, ऑस्ट्रोगॉथ्स, फ्रांस, और भी जो आप लोगों ने लिखा है वो सारा सही है. Okay, now moving ahead with our next question. The Byzantine Empire had able rulers such as Charlemagne. चार्लेमेज जैसे एबल रूलर थे. तो बाइजेंटाइन अंपायर के एक एबल रूलर के बारे में बच्चा हम लोगों ने पढ़ा है. बस एक ही रूलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. क्या वो चार्लेमेज थे या फिर okay, Janvi Tiwari, absolutely correct. Akanksha, Mithi, I'm sorry, that's wrong. Akanksha, you are correct. Mantu, you are correct. Pooja Dubey, Justinian बस नहीं होगा, Justinian 1 होगा. And Poonam Das, I'm sorry, Bacillus नहीं होगा. It will be Justinian 1. Absolutely correct. Justinian 1 will be the answer. Is it clear? Is it clear? Thank you so much. Yes. Okay. Moving ahead to our next question. Question number 5 on your screen. Monks lived in convents. Monks convents में रहते थे. So आपको इस वर्ड को चेंज करके बच्चा सही वर्ड बताना है. आप इस वर्ड को भी चेंज कर सकते थे स्टेटमेंट को सही करने के लिए, लेकिन आपको दिया गया है जो हाईलाइटेड वर्ड है उसी को चेंज करना है. So you need to answer. Okay, I am getting some answer. It will be absolutely correct. It will be monasteries. Monasteries में रहते थे monks. Yes, बच्चा. And the correct answer is given by Janvi Tiwari, Preeti Sinha, Akanksha Kumari, Mithi, Mantu Kumar. Or these are the top 5 people who have answered it correctly. Very good. I am so proud of you. Moving ahead to our next segment, that is one word answer. Now, tighten your buckle. Be fast. Be fast, bacha. Why I'm getting same names again and again? चलो आप लोग भी get up करो. आप लोग भी compete करो. आपका भी नाम आना चाहिए. कैसे बाकी लोग जीत रहे हैं? आप लोग भी करो बच्चा. बाकी लोग जो लोग बाद में आंसर कर रहे हैं, please fill yourself with all the enthusiasm that you have and answer it as quickly as possible. Okay, Kishu Raj, you are being in top 5, but your name is not called. Bacha, I'm sorry if it is happening so. Bacha, I do not know any one of my learners personally, so I will not do this. Bacha, I will make sure कि आपको next answer जरूर मिले. And now you see, आप लोग पहले से ही answer दे रहे हो, so I will not be calling out the names in the next segment. Okay, moving ahead with our next question. Who encouraged non-Jewish to embrace Christianity? किसने encourage किया था non-Jewish people को कि वो encourage करे Christianity को? It will be बच्चा Saint Paul. Yes, it will be Saint Paul. Very good. Now, moving ahead to our next question. What did the Romans call the invading Germanic tribes? Romans ने invading Germanic tribes को क्या कहा था बच्चा? Okay, it's Roman ने Germanic tribes को क्या कहा था? Go ahead and answer. Janvi Tiwari, very good. Mithi, very good. Preeti Sinha, Akanksha Kumari, Reena Kumari, very good. Yes, it will be barbarian. इन्होंने क्या कहा था? Barbarians कहा था बच्चा. Barbarians मतलब uncivilized people, animal-like people or uncivilized people. Okay, moving ahead to our next question. Who built Hagia Sophia? Now आपको पता है Hagia Sophia की एक मस्जिद है जिससे किसने बनाया था? Let me give you an hint कि ये Byzantine Empire में बनाया गया है बच्चा. Byzantine Empire में बनाया गया है. आपको बताना है कि किस रूलर के द्वारा बनाया गया था. Okay, now Preeti Sinha, Mithi, Janvi Tiwari, Kishu Raj, Reena Kumari. These are the top 5 people who have answered it correctly. It will be Justinian. Justinian 1 के
बनाया गया था. Moving ahead with to our next question. Who attacked the Byzantine Empire? Byzantine Empire को किसने अटैक किया था 1453 में बच्चा? 1453 में Byzantine Empire was attacked by whom? Now let's gear up and let's go ahead and answer this as quickly as possible. Byzantine Empire को किसने अटैक किया था 1453 में बच्चा? Poonam Das, very good. Janvi Tiwari, Reena Kumari, Diksha, Akanksha Kumari, 1, 2, 3, 4. Now, fourth tak bacha Kishu, you have got 6th rank. So I'm not calling out your name, but you got 6. Bacha, congratulations to you also. So it will be Ottoman Turks. Very good. Ottoman Turks ने अटैक किया था बाइजेंटाइन अंपायर को 1453 में. मूविंग अहेड, नेम द पोप हु अर्ज्ड द सिटीजन्स टू गो ऑन अ क्रूसेड. वो नाम बताइए, वो टर्क का नाम बताइए जिसने अर्ज किया था बच्चा क्रिश्चियंस को कि चलो क्रूसेड करते हैं और रिकैप्चर करते हैं जेरूसलम को. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? Go ahead and answer this. Now, yes, I got the answer. It will be okay. Pope Urban II, very good. Janvi Tiwari, Meethi, Poonam Sinha, Reena Kumari, Akanksha Kumari. These are the top 5 contestants. Again, Kishu, you have stood 6th. So, okay, मैं top 10 इस बार बता देती हूँ क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है हमारा जिसमें आप लोग क्विज कर रहे होंगे. तो कुशु आप 6 पे आए हो, माही 7, प्रीति सिन्हा 8, Diksha 9th and Anu 10th. Thank you so much all of you for participating. It will be Pope Urban II. Pope Urban II ने अर्ज किया था क्रिश्चियंस को कि let's go on a crusade and this crusade was fought. बच्चा 8 crusade फॉट किए गए थे उस टाइम बीइंग में, आपको पता होगा. और इससे किस लिए फॉट किया गया था? टू रिकैप्चर जेरूसलम. Okay, now moving ahead to our next segment, that is give reasons. Now it is a segment where you need to be calm and you need to understand what will be the reason of the questions, of the things that is asked. Okay. Okay. Okay, Anu, you have the same problem, बच्चा. I am मेरे screen पे जो जैसा दिख रहा है, you can see I am watching on my screen. This is my phone and I am watching this on my screen. And और जैसे जैसे मेरे screen पे आता है मैं वैसे ही answer देती हूँ बच्चा. Also I am watching on my one of the other laptop that is coming इस side पे जो मेरा एक laptop रखा है उसमें भी. I am really sorry अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का नाम नहीं आ रहा है. I am really sorry बच्चा. Okay, so let's proceed with give reasons. Now do not dishearten yourself, Kishu and Anu, please do not dishearten yourself because अभी आप लोगों के पास बहुत सेशन आने वाले हैं solve the question करने के लिए. Apart from this मैं और internal अंदर से भी questions लेकर आऊंगी क्योंकि आप लोग 7th standard में हो, आप लोग को अपने chapters को internally prepare करना है. So मैं उसके लिए भी quiz लेकर आऊंगी. So you do not have to worry about this, right? Moving ahead. Yes. Yes, absolutely. Now, moving ahead to our first question. Emperor Constantine shifted the capital. I would like to say Neetu Jajodia, hi, thank you so much for joining in. Veena Kumari, no worries, bacha, no worries. They are not acting as kids if they are also. So it's okay, you are my kids, right? So it's okay. Let's be kind and let's spread love here. Okay, now first आपका question है Emperor Constantine shifted the capital in 330 CE. 330 CE में Emperor Constantine ने shift किया था अपना capital को. So ये capital कैसे shift किया गया था और क्यों किया
किया गया था? You need to give the reason. So Emperor Constantine shifted the capital in 330 because उनका मानना था बच्चा, he believed that the Roman Empire had become too big. उनका मानना था कि रोमन अंपायर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है to be administered efficiently. उनका मानना था कि रोमन अंपायर बच्चा क्या हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है to be administered efficiently उस जगह से, इसलिए उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you, Bacha. Thank you, Poonam Das, for appreciating. And all of you are absolutely correct. So thank you so much. Moving ahead to our next question. 8 crusades were fought in the medieval period. 8 crusades fought किए गए थे बच्चा medieval period में. Why? Now 8 crusades were fought in the medieval period because पहला reason क्या है? पहला reason is Turk captured the Jerusalem. Now Jerusalem is a holy place. You all know holy place है वो किसका? Christian people का. क्रिश्चियन पीपल का वो होली प्लेस है. सो टर्क्स ने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया था एंड दे थ्रेटेंड द क्रिश्चियन विजिटर्स एंड लेटर बैंड देम. पहले उन्होंने उन्हें डराया, धमकाया, थ्रेटन किया और बाद में उनकी एंट्री को जेरूसलम में बच्चा बैन कर दी. ये आपका पहला रीजन है. दूसरा विल बी आल्सो द विक्ट्री ऑफ द टर्क्स ओवर द बाइजेंटाइन एम्पायर. टर्क्स ने बाइजेंटाइन एम्पायर को ले लिया था. बाइजेंटाइन एम्पायर क्या था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर. ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाद में रिनेम करके बाइजेंटाइन एम्पायर बन गया था, राइट? सो ईस्टर्न रोमन एम्पायर को इन लोगों ने ले लिया था. दैट लेड मेनी क्रिश्चियन दैट टू बिलीव यहाँ पे बिलीव होगा, believe that their religion was under threat, कि उनके रिलीजन, उनके धर्म पर क्या आ चुकी है? उनके धर्म पर संकट आ चुकी है. Against this background in 1095 CE, Pope Urban II ने अर्ज किया क्रिश्चियंस को to let's go on a holy war ताकि वो recapture कर पाए जेरूसलम from the Turks, right? So between 1096 से लेकर 1291 तक बच्चा ऑलमोस्ट 200 years तक 8 crusade wars fought की गई. ओके, इज इट क्लियर? ओके बच्चा, आई कैन सी देयर आर पीपल. Okay, बच्चा, please Anu, please do not engage in such thing. Please आप लोग गुस्सा मत हो. ये बहुत ही ऐसा फन सेशन हो रहा है. प्लीज आप लोग एक दूसरे से गुस्सा मत हो और आप लोग इस तरीके से कमेंट्स मत करो. Okay, now moving ahead with okay, thank you so much. All of you have answered it correctly. This will be the detailed answer, bacha, that your teacher will be looking for. Okay, now moving ahead. Now to come to the question and answer, and the very first question. Let's see the very first question on the screen. How did Emperor Constantine help to spread the Christianity? सबसे सही मतलब कि सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चा. कॉन्स्टेंटाइन ने किस तरीके से हेल्प किया था स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए? सो एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन टुक सेवरल स्टेप्स टू हेल्प द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. फर्स्ट वाज ही ग्रांटेड क्रिश्चियंस द फ्रीडम ऑफ द वर्शिप. उन्होंने उन्हें फ्रीडम दिया कि वो अपनी वर्शिप कर पाए. यस मिठी. मूविंग अहेड, ही गेव इंपॉर्टेंट जॉब्स टू द क्रिश्चियंस. उन्होंने जॉब्स दिए, इंपॉर्टेंट जॉब्स दिए क्रिश्चियंस को. मूविंग अहेड, डिक्लेयर्ड संडे को उन्होंने पब्लिक हॉलिडे बना दिया ताकि लोग अटेंड कर पाए चर्चेस को. एंड उन्होंने बिल्ड किया बहुत सारे चर्चेस को. सो दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट? मूविंग अहेड, डिस्कस द कॉजेस. द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चा. Discuss the causes of the decline of the ancient Roman Empire. What was the impact of the barbarian invasion? Barbarian कौन थे? Germanic invasion का. So decline क्यों हुआ Roman Empire का? So the cause of the decline of the Roman Empire was the corrupt ruler. पहला cause आप दे सकते हो, corrupt rulers थे. दूसरा cause है attacks by the Germanic tribe.
जर्मैनिक ट्राइब के द्वारा अटैक किया गया, such as Visigoths, Ostrogoths, Vandals, and Franks. They plundered the treasure, killed and enslaved many Romans, and destroyed many buildings. Okay. So this was what happened after that. So this is the impact of the barbarian invasion. Now you can also यहाँ पर add that the European referred them as the barbarians, so that's why it is known as barbarian invasion. Moving ahead, final blow कब आता है जब the barbarian chief called Aldous अपने आप को king बना देता है बच्चा, वो अपने आप को किंग बना देता है इटली का, एंड फोर्स द लास्ट एम्पायर ऑफ द रोम टू गिव अप द क्राउन. ओके, सो दिस इज ma'am, I have a doubt. Who called the Germanic tribes barbarian? Germanic tribes को barbarian किसने कहा था बच्चा? The European people called the Roman people called them the barbarians. Okay, this is clearly given. Okay. Okay. Is it clear? The Roman people call them barbarian. Bacha Janvi and Neetu Jajodia, I will be answering all your queries at the very end. So please अभी के लिए बस focus करो उस पे, और फिर मैं आप लोगों को आपकी queries पे भी answer करूंगी. Okay. Now comes the third question. What is feudalism? What is feudalism? Who were the serfs? Feudalism क्या है और serfs क्या है? Feudalism is a system of granting lands by the lords to the vandals. बच्चा, lords ये आपका feudal system है जहां पर kings है, आपके nobles हैं, lords हैं, that is the knights हैं आपके यहाँ पर, और आपकी लास्ट में peasants है. So जो ऊपर में जो land जिसको दूसरे को देता है वो बन जाता है lord, और जिसको मिलती है land वो बन जाता है vassal. So king के लिए vassal है nobles, and nobles के लिए vassal है कौन? Knights. सो ये क्या होता है? ये लैंड का सिस्टम है जिसमें लॉर्ड्स वैसल्स को लैंड देते हैं इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, और वापस में वो क्या मांगते हैं? प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी मांगते हैं. अगर आप अपने एग्जाम में ये छोटा सा डायग्राम बना दोगे कि इस तरीके से यहाँ पर किंग है, यहाँ पर नोबल्स है, यहाँ पर नाइट्स हैं और पीजेंट्स हैं, सो ये ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है बच्चा आपके टीचर्स के लिए. Now, moving ahead to the serfs. Who were the serfs? Serfs were the slaves, bacha. They were the bounded laborers. बंदी वाले laborers थे, slaves थे, वो बंदा मजदूर थे, who occupied the lowest rung amongst the peasants. Peasants अपने ही सबसे नीचे हैं, और उसमें भी peasant में भी जो सबसे नीचे थे वो थे serfs, बच्चा. Okay, is it clear? Now, very good, very good. Moving ahead to our fourth question. The crusade left a lasting impact on Europe. Crusade ने एक lasting impact छोड़ा था यूरोप में. List any 2 points to explain this particular statement. इसको explain करने के लिए 2 points आपको बताने हैं. हालांकि आपको 3 points आपके बुक में दिया हुआ है. एक की पोप की अथॉरिटी बढ़ जाती है, दूसरा डिक्लाइन हो जाता है फ्यूडलिज्म का, और तीसरा राइज होता है रेनेसांस का. आपको कोई दो बताना है बच्चा. मैंने दो लिया है. इंक्रीज ऑफ पोप्स अथॉरिटी, दैट द क्रूसेड इंक्रीज द पोप्स अथॉरिटी अमंग्स द क्रिश्चियन पीपल. क्रिश्चियन अब पोप्स को एज अ गाइड और लीडर देखने लगे थे. वेरी इजी पॉइंट. नाउ द सेकंड विल बी द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म. Crusades exposed the culture and the scientific progress of the Greeks and the Turks. क्रूसेडर्स जो थे, जो रोमन एम्पायर के थे, वो ग्रीक्स और टर्क्स के जो कल्चरल और साइंटिफिक प्रोग्रेस थे उससे वो एक्सपोज होते हैं. Serfs were labor. No, bacha, not labor. They were the bonded labor. That is, banda mazdoor the wo log, bas mazdoor nahi the. The Crusaders learned about the magnetic compass and the gunpowder from the Turks. वो Turks से magnetic compass and gunpowder जानते हैं. Hello, Sneha Das. Thank you so much, bacha, for visiting in. Use of the gunpowders greatly undermined the role of the knights. Now, अब आप अगर फ्यूडलिज्म में देखो तो नाइट्स वर द वन, नाइट्स थे जो क्या कर रहे थे? प्रोटेक्शन दे रहे थे, या फिर जो लड़ रहे थे वॉर्स में,
हैं, लेकिन क्योंकि अब गन पाउडर आ गया सो अब लोग अपने ही सब लोग यूज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इस वजह से व्हाट हैपेंड बचा कि गन पाउडर ने ग्रेटली अंडरमाइन कर दिया रोल ऑफ द नाइट्स एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म। Thank you so much, Sneha Das. That is a beautiful compliment. Thank you so much. I am really glad that you are loving my sessions, and I will be working more towards it. I will be bringing more for you people. Thank you so much, Sneha, for doing that. Okay. मैम इज सर्फ सिमिलर टू द पीजेंट्स? नहीं बच्चा, सर्फ और पीजेंट्स में अंतर है। सर्फ्स कौन है? सर्फ स्लेव्स हैं, बंदी बनाकर रखे गए हैं, और पीजेंट्स कौन है? पीजेंट्स फ्री है, फ्री लेबर्स है, ये अपनी रोटी कमा सकते हैं, ये फ्री लेबर्स हैं, ये बॉन्डेड लेबर्स है। बच्चा इस दोनों में डिफरेंस समझो। बॉन्डेड मतलब किसी के अंडर में, इन्हें जो लोग कहेगा वही, अगर इन्हें खाना बोलेगा तुम्हें आज खाना नहीं खाना है, नहीं खाएगा, उसे जो काम बोला जाएगा वो करेगा, वो किसी के अंडर में है। पीजेंट्स फ्री लेबर्स है, अगर इन्हें भी काम करवाया जाता है, लेकिन ये बंदी नहीं है, किसी के बंधक बनाकर इन्हें नहीं रखा जा रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Okay, now moving ahead to our last question. Write 2 points to show the monasteries played an important role in medieval Europe. Medieval Europe में monasteries का एक बहुत important role है, so आपको वो बताना है कि वो उसके 2 points बताने हैं। आपकी बुक में 3 points दिए हैं, आप 2 से चुन सकते हो। So the 2 points to show that the monasteries played an important role are, first is the center of religion. बच्चा ये क्या monastery बन जाती है? सेंटर ऑफ रिलीजन बन जाती है। Monasteries were centers for which Christianity spread to other religion. Monastery एक ऐसा सेंटर बन जाता है जहां से क्रिश्चियनिटी अलग अलग रीजन में फैलती है, क्योंकि monks travel to spread the message of Jesus Christ. Monks बहुत फार जगहों पर ट्रैवल करते हैं और वो स्प्रेड करते हैं फॉर दिस ट्रैवल करते हैं और स्प्रेड करते हैं ये मैसेज। आई एम मोर देन, थैंक यू अंकित कुमार, आर्ट एंड क्राफ्ट, थैंक यू बच्चा। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प you all in this session. Okay, moving ahead to our next second point क्या है? सेंटर ऑफ सेक्युलर लर्निंग। पहला ये सेंटर ऑफ रिलीजन है, जहां से रिलीजन क्रिश्चियनिटी का फैल रहा है, क्योंकि मॉन्क्स इधर उधर जाकर वो प्रीच कर रहे हैं। दूसरा है monasteries were the centers of learning. Monks studied Latin and hand copied book. उन्होंने hand copied book बनाए, और ये जो hand copied book है, they were named or they were called as manuscripts. और इन manuscripts को उन्होंने डेकोरेट किया with pictures and pattern, and thus it could be said that monastery is a place where religion was growing and also secular learning was growing. Yes, very good. Thank you so much, Bacha, for this. Now we have come to an end. Now you can go ahead and ask me the question. Now the very first question that I got from Neetu Jajodia and Janvi Tiwari is that, ma'am, geography का session कब आएगा? बच्चा आप geography का first chapter का session चाहते हो? Tell me yes or no. You want this geography का session? Go ahead and write it down that you want this geography का session, or you want the question answer of all the chapters of geography. आप दोनों में से क्या चाहते हो? आप geography का chapter 1, 2 और 3 पे session चाहते हो, या फिर आप उसके question answers चाहते हो? Thank you so much. Thank you so much, Neetu Jajodia, Janvi Tiwari, Kishu, thank you, bacha. Ankit, thank you, Mithi. Yes, Deeksha, thank you so much, bacha. Please tell me that what do you want? Okay. Okay, bacha. Okay. So you are finding difficulties in chapter number 1. आपको chapter number 1 में दिक्कतें आ रही है. So आप चाहते हो कि
आप चाहते हो कि मैं चैप्टर नंबर 1 लाऊं, so it is done बच्चा. Tomorrow itself I will be bringing chapter number 1 for you. आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, चैप्टर 1 आपके लिए मैं कल लाऊंगी. So आपको ये याद रखना है, एग्जाम्स के पहले go through all my sessions बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन 20 से आएंगे. So it is very very important for you to answer all those questions. Now any more question? ओके, क्वेश्चन आंसर और ये दोनों चीजें आपकी आएंगी कल. आपका आएगा सेशन चैप्टर नंबर 1 पे. ओके बच्चा, नाउ एनी मोर क्वेश्चन दैट you have 1 or 2 minutes, go ahead and answer me. Till then I can ask you that if you liked my video, please do like it and also share with your friends, all the friends whether you know who are in ICSE school, जो आपके स्कूल के हैं, आपके शहर के हैं, आपके देश में लेकिन ICSE स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों, और उनको भी यही सेम चैप्टर बुक्स चल रही हैं. सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो. द मोर द चैनल विल ग्रो, द मोर it will encourage me to produce more sessions, right? If the channel will remain stagnant, अगर वो एक जगह रुक जाता है, उसमें growth नहीं दिख रही है, मुझे लगेगा आप लोग interested नहीं हो. So why I will work so hard, right? Now also subscribe to my channel if you are new to this. This is very important because first of all आपको वहां पर बेल आइकन मिलेगा. वो बेल आइकन को दबाना is very important ताकि आपको हर सेशन का नोटिफिकेशन मिले. Soon I will be posting a community post. मैं आपको टाइम टेबल का बच्चा हर वीक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी ताकि आपके पास एक टाइम टेबल रहे. अभी क्योंकि मैं आपकी डिमांड पर रैंडमली चीजें लेकर आती हूँ, जैसे आज आपने मुझे बोला कि कल मैम आप चैप्टर नंबर 1 लेकर आओ, मैं चैप्टर नंबर 1 लेकर आऊंगी, इसलिए मैं अभी तक कम्युनिटी की पोस्ट नहीं डाल रही हूँ. सो दिस इज टू बी डन. एंड सेकेंड, वन ऑफ माई learners have suggested me for a telegram, so I will soon be making my telegram app bacha. So telegram group, so do not worry about this. And also I will be sharing my Insta ID, so you can go ahead and follow Instagram. Also you can go ahead and connect me on Instagram. So all these I will be doing it and I will be sharing in नीचे दिए गए description box में मैं उसे share करूंगी. So you can this will take some time. It may take a week bacha, but I will be going to do this. So thank you so much. Thank you bacha for all of you that you have okay, you have thank you. So now I can now say goodbye to everyone. Now thank you so much everyone for joining in. Now I will be saying goodbye. Take care. Please visit my channel once again जब मैं आपके लिए लेकर आऊँ. And I'm really overwhelmed कि आप लोग इतना 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 ज़्यादा प्यार करते हो मेरे सेशन से मुझसे. I am really happy to be your educator, bacha. I'm really more than happy, and it is my privilege that I am here to help you out. Right. Moving ahead. Thank you so much. I will be taking a goodbye. We will meet.